भैया कौन सा जगह ये? ये थंगू चेक पोस्ट। कितना ठंडा होगा अभी? 2 डिग्री 1 डिग्री? अभी 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री में मैं बिना टोपी के घूम रहा हूँ। हाँ। मुझे उम्मीद है ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ ये। चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं। पकड़ने से बहुत ठंडा लग रहा भाई। फिर इसमें क्यों बोला? हाँ वैसे ही मजा। It was day 3, 11th of October, and I went from Lachen to Gurudongmar Lake. And it was an early morning at 4:30 a.m. when I just woke up. गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरी नींद खुली हुई है पिछले 1 घंटे से। बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड के मारे मेरी नींद खुल गई। एंड यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, किसी तरह फ्लैश लाइट से काम चला रहा हूँ। बहुत ही अजीब सा मुझे लग रहा है। नींद पूरी हुई नहीं है, सर दुख रहा है। तो देखते हैं कब लाइट आएगी, तो थोड़ा गर्म पानी वगैरह करना पड़ेगा। बुरा हाल है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। पता नहीं कैसे जाऊंगा, लेट्स सी। Well, I somehow got out of the bed and managed to get ready. But निकलने से पहले have a look at this beautiful view from my hotel balcony. हे गाइस, मैं अभी निकला हूँ होटल से, लाचन से, गुरुडोंगमार लेक के लिए। बहुत ठंडा है। अपना लॉलीपॉप भाई रात से खड़े थे, मैं लेट कर दिया, गुस्सा कर रहे हैं। मेरे नए भाई है ये, है ना। तो ठीक है, जो भी है जोक सपाट। अभी हम जा रहे हैं, सो फिर आगे बात करते हैं। रोड पे आप सीनरी एंजॉय करो, ठीक है। और मैं बार बार इधर देख रहा हूँ, कैमरा इधर है। मैं सॉरी, मैं इधर गलती से देख ले रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम याथंग वैली। बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है मुझे, और मेरे साथ अभी यहाँ पे सनम भाई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है इधर तो। अच्छा लग रहा है? आपकी मिलके भी बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे प्यारे लोग हैं। ये लॉलीपॉप भाई कुछ ला रहे मेरे लिए खाने के लिए। ब्लैक टी चाहिए? हाँ ब्लैक टी। ब्लैक टी, हाँ ब्लैक टी बिना दूध का। हाँ ठीक। हाँ। और फिर मैगी मैगी बन रहा है। हाँ ठीक है। अभी मैगी तो ब्रेक टाइम में तो 2 मिनट में बनता है, तो 5 मिनट। कोई बात नहीं है ना। अब देख रहे हैं कितने अच्छे लोग साथ मदद कर रहे हैं मेरे को ना। गाड़ी में ऐसे सर घूम रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही टाइट वाइट बेल्ट पहन लिया हूँ, तो पता नहीं। खैर द हाइट हेयर, इसका हाइट है यहाँ पे, इस वैली का हाइट 12,000 फीट है। 12,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सामने पानी मतलब जा रहा है। लोग कहते हैं ये गुरुडोंगमर से आ रहा है ना, शायद गुरुडोंगमर का ही ग्लेशियर से गलते आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी मेन मेरा चैलेंज है कि अब कैसे इस ठंड में आगे तक जाएं और अपने आप को ठीक बनाए रखें, है ना। उसी की मतलब अभी बस कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंतज़ार है। बहुत ही प्यारा। आप नेचर का मतलब जस्ट लुक एट द नेचर का कॉन्ट्रास्ट देखिए, कितना सुंदर है। बहुत मतलब मेरा आधा तबीयत तो इसी को देख के ठीक हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे जाते हैं और अभी थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं। हेडिंग टुवर्ड्स गुरुडोंगमार लेक नाउ। गर्मा गर्म मैगी खाया है, थोड़ा जान आया, नहीं तो इतना ठंड लग रहा था, कांट एक्सप्लेन। Gurudongmar Lake is situated on the location of on an altitude of 17,800 feet. It is one of the highest lakes in the world, and of course in India. So now let's get ready and we'll now go up towards that. Sanam, ready? Ready. Once more.
So after 4 hours of tiring journey and an amazing sightseeing, we finally reached Gurudongmar Lake, and here are the best scenes for you in 3, 2, 1.